Hello students, welcome back to writing skills. I have explained you report writing in first term. Letter writing also I have explained. Then also some of the writing skills we will revise. It is a part of revision. Let's start with notice writing. Students, do you understand the word notice? It is formal writing. It means it is not lengthy. You have to work point to point and you will provide only the important details. So let's start with notice writing. Let's see how to write a notice. The points are on your screen. First of all, you will write the name of institute. Then you will write the word notice in bold letters, in capital letters, NOTICE. Then date of issue of the notice on left side and heading. It means subject of notice. Then you will write the main content, only this much. What kind of language you will use in writing notice? It must be in third person. It means you have to avoid the usage of the pronouns like I, me, you, mine, your, etc. You will not use these words at all. Then which tense you will use? You will use only present or future tense. Notice is meant for present or future use only. So you will use present or future tense. Then after writing the notice, enclose the whole content in a box. Enclose the whole content in a box. Then strictly follow the word limit if given. If it is given you have to write 100 or 100 or 80 to 100 words, then you will write in 80 to 100 words only. Don't write too much. And notice must be precise and effective. Precise means point to point, not very large, and it must be effective. The purpose of notice should be fulfilled. For which reason you are giving the notice, that should be clear and effective. Now let's see the sample notice format. Here it is given, you are Shyan of class 12. As the cultural secretary of your school, draft a notice for an inter-school fancy dress competition. Here the name is provided Shyan and the designation is also provided cultural secretary. So first of all, when you start writing notice, read the title, read the question very carefully. If some details are provided, then you will use those details only. For example, name, designation, etc. You will not write your name if name is provided. Then draft a notice for an inter-school fancy dress competition. What is the subject of this notice? It is inter-school fancy dress competition. Now let's see. First of all, you are writing the notice on behalf of your school as you are cultural secretary. So the name of institution must be in bold letters, Crystal International Public School. Don't write SIPS. SIPS only we know that we are also called SIPS. But the school other than us, they don't know who is SIPS. Okay, so write Crystal International Public School. After that, write the title notice, NOTICE, in capital letters, in bold letters, बड़ी handwriting में लिखोगे. Then you will write the date, current date on which you are writing the paper. Okay.
So here the date is given, but you will write the date on which you are writing the paper. Okay, then subject of notice is inter-school fancy dress competition. It is already given. Now let's start the main body of this notice. An inter-school fancy dress competition is being organized on 30th January at Madhav Farm. See, here the date is 29th December. According this date, the fancy dress competition date is given. So you will do such things in relation, which is related to each other. Okay. So here an inter-school fancy dress competition is being organized, यानी कि होने जा रहा है. कब है? 13th January at माधव फार्म. 13 जनवरी को कहाँ पर है? माधव फार्म में. Those willing to take part in the items which our school will be presenting should come for selection on 1st Jan 2020 at 12:30 p.m. in 3D room. Now, those who are who want to take part in the competition, they should come for selection. It means अभी ऑडिशन लिया जाएगा, सिलेक्शन होगा. On when they have to come? 1st January 2020 at 12:30 p.m. after school in 3D room. Only class 6 to 12 students are eligible. It means the students from classes 6 to 12 will take part in this competition. Dresses should be organized by the participants. देखो सारी डिटेल्स दी है ना. ड्रेसेस शुड बी अरेंज्ड बाय द पार्टिसिपेंट्स, यानी कि फैंसी ड्रेस में जो ड्रेसेस पहनने हैं दैट शुड बी अरेंज्ड बाय द पार्टिसिपेंट्स. श्यान, द नेम इज ऑलरेडी गिवन इन द टाइटल, सो यू विल राइट दैट नेम ओनली, श्यान, एंड you will write the designation cultural secretary. Okay, after writing you will enclose the whole notice. देखो पूरी नोटिस है, हमने पूरी नोटिस है वो एक बॉक्स में एनक्लोज कर दिए हैं, ड्रॉ किया है ना एक लाइन पूरे बॉक्स में. ओके, तो पूरी नोटिस आपको एक बॉक्स में एनक्लोज करनी है. अंडरस्टूड. नाउ सी, फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने जा रहा है तो उसकी सारी डिटेल्स दी हुई है ना, सारी डिटेल्स दी हुई है कि कब है, कहाँ पर है, क्या करना है, जो स्टूडेंट्स, कौन से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, फिर ऑडिशन होगा, कितने बजे होगा, कहाँ पर है ना, और ड्रेसेस के रिलेटेड भी सारी इन्फॉर्मेशन दी है. इट मीन्स द नोटिस इज़ इफ़ेक्टिव एंड प्रिसाइज, शॉर्ट एंड स्वीट है और इफ़ेक्टिव भी है, सारी डिटेल्स दी हुई है. अंडरस्टूड. सो यू विल राइट इन दिस मैनर द नोटिस राइटिंग. Next writing skill is formal letters. It means official letters. Official letters means which are written to the editor of the newspaper or to the manager of any company or to your teacher or principal of the school. Understood? So what will be the format, the layout of formal letters? See, here I have given you the latest type of format which is called box type layout. What it is called? Box type layout. Now, how to write the formal letter? What is the format? First of all, you will write your address. Now, some of the students, they don't know how to write the address. First of all, in address, your house number will be written. Understood? Your house number. For example, here it is given 105. Then comma. Put comma after your house number. Vraj Vihar apartment. Then you will write your apartment name. Then you will write the area Alaknanda, comma,
Alaknanda is the area name. Then you will write the city name, New Delhi. Then pin code. That's it. Khatam. Okay, don't put any mark after pin code. This is your address. You can write any of the address. It is not compulsory that you have to write your own address. कोई भी address लिख सकते हो. Okay. Then after writing the address, you will leave one line and write the date. Here also you will write the current date on which you are writing the paper. Okay, exam date लिखोगे. For example, if your exam is on 5th May, तो 5/5 okay 21. Whatever the exam date is, I don't know, but you will write the exam date. Understood? Then after writing the date, don't put any mark, don't put comma, don't put full stop, nothing, only date. Now you can write date in any of the method, like 5th May 2021, or you can write 5/5/21. Okay, any of the method you can use. After writing the date, leave one line. This is the mark of leaving one line. Leave one line. Then write the designation of the receiver. जिसको आप लेटर लिख रहे हो, जिसे आप लेटर लिख रहे हो, किस पोस्ट पे है वो इंसान, किस पोस्ट के इंसान को आप लेटर लिख रहे हो, दैट यू विल राइट द एडिटर. Okay, after that put comma. Then the Hindustan Times, comma. एडिटर किसके हैं, तो न्यूज़पेपर है. कौन सा न्यूज़पेपर है, हिंदुस्तान टाइम्स. आफ्टर दैट राइट द एरिया नेम, बहादुर शाह जफ़र मार्ग, कॉमा, न्यू दिल्ली, फुल स्टॉप. ओके, दिस इज कॉल्ड रिसीवर्स एड्रेस. अंडरस्टूड? After writing receiver's address, again you will leave one line and write dear sir, which is called salutation. Which is called salutation. After writing dear sir, this is very important, students. Pay attention here. After writing dear sir, put comma, then leave one line and write the subject. If you will not write the subject, your 1 mark will be lost. Okay, so don't forget to write the subject in formal letters. This is formal letter. Okay, so you have to write subject. What is the subject? Rising food prices, यानी कि खाने की चीज़ें जो हैं, खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं, उसके प्राइस हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं. डे बाय डे द प्राइजेस आर राइजिंग. ओके, सो what is the subject? Rising food prices. This is called subject of letter. Understood? Then after writing subject, leave one line and write body of letter, which will be in 2 to 3 paragraphs. Body of letter means main content of letter. Main content of letter. किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं? यू आर राइटिंग अबाउट राइजिंग फूड प्राइजेस. यू विल राइट 2 to 3 पैराग्राफ्स फॉर दिस सब्जेक्ट. एंड आफ्टर राइटिंग 2-3 पैराग्राफ्स, what you will do? After leaving one line, again what you will do? Yours faithfully, Soumi Gupta. Or you can write XYZ. Because it is formal letter, putting signature is compulsory. So write XYZ and then write the name. Okay, this is the format of letter. Now let's see the sample formal letter.
What is the title of formal letter? Read the title first. Rahil Sharma wants to buy a new laptop of a well-known company. राइट अ लेटर आस्किंग फॉर द डिटेल्स फॉर द सेम. यानी कि राहिल शर्मा है, नाम दिया हुआ है, नेम इज़ गिवन. राहिल शर्मा वॉन्ट्स टू बाय अ न्यू लैपटॉप ऑफ अ वेल नोन कंपनी. एक बहुत ही फेमस कंपनी है, उसका लैपटॉप ख़रीदना है उसे. राइट अ लेटर आस्किंग फॉर द डिटेल्स फॉर द सेम. आपको वो लैपटॉप के लिए डिटेल्स मांगते हुए एक लेटर लिखना है. दिस इज़ फॉर्मल लेटर. So first of all we will write the sender's address. What is the sender's address? Rahil Sharma, 116, Green Avenue, Kolkata, then pin code number. Okay, then leaving one line, write the date. For example, 5th May 2021. Understood? So name is given, then you will write the given name only. If name is not given, write XYZ. Understood? Then Rahil Sharma is writing the letter to the well-known company of laptop. तो हम लोग जनरली लैपटॉप के लिए डेल कंपनी है, सबसे बेस्ट है, वेल नोन है. ओके, तो हम लोग कंपनी में लेटर लिख रहे, तो ऑलवेज द डेजिग्नेशन इज़ द मैनेजर. जो मैनेज करता है हर एक चीज़ को, दैट इज़ कॉल्ड मैनेजर. द मैनेजर. देन पुट कॉमा, Dell India Private Limited, Bangalore, then write the pin code. Then leaving one line you will write dear sir, comma, then write the subject. What is the subject? To inquire for Dell new inspiration laptop. What is the subject? Why you are writing the letter? To inquire for Dell new inspiration laptop. Okay, so write the subject clearly. Now see the main content, body of the letter. I referred your catalog and thinking of buying a Dell new Inspiron. Then the model number is given, 157591 laptop. राहिल शर्मा इज़ राइटिंग, आई रेफर्ड योर कैटलॉग. कैटलॉग पता है ना, जिसमें सारी चीज़ें रेट के साथ लिखी गई होती है, मॉडल दिए होते हैं, पिक्चर्स दिए होते हैं उनके, कि दैट इज़ कॉल्ड कैटलॉग. आई रेफर्ड योर कैटलॉग एंड थिंकिंग ऑफ बाइंग अ डेल न्यू इंस्पिरन 157591 लैपटॉप. कि मैंने कैटलॉग देखा, उसके बाद मैंने डेल न्यू इंस्पिरन 157591 लैपटॉप खरीदने के बारे में मैं सोच रहा हूँ. बट आई एम नॉट क्लियर इन 2 points. लेकिन ये सब चीज़ें तो देख ली मैंने, बट आई एम नॉट क्लियर इन 2 points. विच 2 points? द बैटरी लाइफ ऑफ लैपटॉप एंड वेदर इट इज़ इंस्टॉल्ड विथ लाइसेंस्ड जेन्युइन विंडोज़ और नॉट. यानी कि लैपटॉप की बैटरी लाइफ और वो लाइसेंस जेन्युइन विंडोज़ से इंस्टॉल है कि नहीं, यानी कि उसमें जो भी प्रोग्राम्स फीड किए गए हैं वो सारे जेन्युइन विंडोज़ से लाइसेंस्ड हैं कि नहीं. दिस 2 things आई हैव द क्वेरी. Kindly let me know about your branch or authorized dealer in Kolkata, because I am living in Kolkata. So let me know about your branch. यानी कि कोलकाता में अगर आपकी कोई ब्रांच है तो उसके बारे में मुझे बताओ. और ऑथोराइज डीलर इन कोलकाता, या तो कोई डीलर है जो ये कंप्यूटर्स बेचता है, ऑथोराइज्ड है, उसका मुझे एड्रेस दो. वेयर आई कुड एग्जामिन द लैपटॉप एंड सी इट्स वर्किंग. ओके, क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट टू एग्जामिन द लैपटॉप एंड सी इट्स वर्किंग, हाउ इट वर्क्स. I would also like to know whether you provide any discount to the students.
One more thing I want to know, whether you provide any discount to the students or not, because I am a student. Will I get a discount on laptop? I want to know. If you will be good enough to supply the information referred to above, I shall let you know at once whether I wish to buy the laptop or not. If you will be good enough to supply the information, अगर आप हमें ये information बताते हो तो तुरंत ही मैं आपको ये बता दूंगा कि मुझे लैपटॉप ख़रीदना है कि नहीं ख़रीदना है. अंडरस्टूड? तो ये हो गई मेन बॉडी. आफ्टर दैट, leave one line and write yours faithfully. Then again leave one line, put the signature, है ना, signature रखनी है. And in bracket you will write the name. Which name we have written? Which name is given in title? Rahil Sharma. So you will write Rahil Sharma only. Understood? So this was the फॉर्मल लेटर. ये फॉर्मल लेटर था. इनफॉर्मल लेटर होता है, सेम ऐसा ही होता है, बट उसमें क्या चीज़ चेंज हो जाती है, उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है. सब्जेक्ट विल नॉट बी गिवन. सब्जेक्ट, यू विल नॉट राइट सब्जेक्ट इन इनफॉर्मल लेटर. ओके, सब्जेक्ट नहीं लिखना है वहाँ पर. और इनफॉर्मल लेटर है वो किसे लिखे जाते हैं? इनफॉर्मल लेटर से रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, उनको लिखे जाते हैं. And formal letters are written to the editor, to the manager, to the teacher, to principal. Okay, इनको formal letters लिखे जाते हैं. Okay, formal letters में हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है. अदरवाइज एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, सेंडर एड्रेस, ये सब सही है. सैल्यूटेशन भी, जो फॉर्मल लेटर है हम लोग लिखते हैं डियर सर, और इनफॉर्मल में लिखते हैं माय डियर फ्रेंड, माय डियर मासी, या माय डियर आंटी, या माय डियर अंकल, है ना, ऐसे लिखते हैं. तो ये डिफरेंस है फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर का. ओके, देन फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट कंपलसरी है, जबकि इनफॉर्मल लेटर में हम लोग सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं. ओके, फिर यहाँ पर फॉर्मल लेटर में फिक्स है 2 से 3 पैराग्राफ्स, बस, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते. बट इनफॉर्मल लेटर है उसमें हम जितना चाहें उतना लिख सकते हैं. ओके, फिर फॉर्मल लेटर में हम लोग लिखते हैं योर्स फेथफुली, और इनफॉर्मल लेटर में हम लोग लिखते हैं योर्स लविंगली, योर्स सिंसियरली. ओके, और हम अपनी खुद का नेम लिखते हैं. दैट इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल लेटर. बट आई एक्सप्लेन यू फॉर्मल लेटर. So keep this in your mind, and the PDFs will be uploaded in Pocket Study. But do refer Pocket Study for the written notes. I hope you understood everything and will do nice in exam, will do good in exam. Write all the things in proper format. If you will not write the comma or full stop or date properly, or not leaving the line, not writing the subject or salutation, then marks will be cut. So be very careful in writing the format of formal letters. In this format only you will write the formal letter. Understood? That's why I have given you the sample letter also. इसी तरह से in exam you will get different point, different title. This is just the sample, but it will be easy for you to write. Understood? I hope you understood everything, and write this letter and find out 1-2 other points to write in this manner, so that you will have the clear idea before exam regarding this thing. If any doubt is there, if any problem is there, you can ask in online lecture. We will meet next time. Till then, bye.